Greetings, students, and welcome back to our English class. Now, what were we doing? We are not afraid to die if we can all be together, right? And this is the last part that we are doing, okay? Now, children, let us just take a brief summary of what we did in the previous video. Okay, now the family celebrated the new year 1977 on board the ship. Next came a phase when the ship was caught in a stormy seas. The weather suddenly became very terrible. The writer thought that their ship would ride over waves but were heavily caught amidst the stormy situation at the sea. अब ये कहाँ ढूंढ रहे हैं? अब ये आइल और एम्स्टरडैम ढूंढ रहे हैं चिल्ड्रन. और जब ये आइल ऑफ एम्स्टरडैम ढूंढ रहे हैं, वहाँ पर 2 आइलैंड है, ठीक है, उस ओशन में. और वो जब वो चीज़ें ढूंढ रहे हैं ताकि क्या कर सके, वो अपने आप को बचा सके, क्योंकि अब शिप पे होल हो गया है. इट इज़ ऑल ब्रोकन चिल्ड्रन एंड वाटर इज सीपिंग इन, राइट. विथ कंटिन्यूस they are actually pumping the water out. Now it is very necessary, children, that they managed to find a island. Kya hota hai? Tapu, a piece of land which is surrounded by water on all sides, right. And what happened on January 4th? We are on January 4th. They breathed a sign of relief after having survived for 36 hours of continuous pumping. However, the relief seemed to be quite short-lived, because by the evening, the sea again witnessed bad weather, right? Now, this is the turning point of the story, where we see the author consoling the children. It was quite amazing when the children said, "We aren't afraid to die if we all can be together." Okay, now this led to the building energy and enthusiasm inside a very extremely fatigued writer. He decided to heave and fight the sea. Now यहाँ पर वो कार्ड देती है, and she's like कि see, I'll show you where it is written. She has written that inside way a message, "Oh, how I love you both," right. So this card was a caricature, the pictures of people who are very and who are the people, Mary and the writer. So this card was a thank you card, and she wrote it, let us hope for the best. Now we will be doing the last part of it. Okay, now let us see. I checked and rechecked my calculation. वो calculation कर रहा है अब, ठीक है, किससे सेक्सटेंट से. व्हाट इज़ अ सेक्सटेंट? एन इंस्ट्रूमेंट, ताकि वो सारी डिग्रीज पढ़ सके कि कहाँ पर आइल ऑफ एम्स्टरडैम हो सके. वी हैड लॉस्ट अ मेन कंपस, ठीक है, जिसमें मैग्नेट होता है और जो 100% करेक्ट होता है वो क्या हो गया, वो उनसे खो गया था, है ना, क्योंकि पानी अंदर आ चुका था, सारा सामान इधर से उधर हो चुका था. I was using a spare which had not been corrected for magnetic variation. बोले कि मैं एक दूसरा स्पेयर जो होता है, एक्स्ट्रा जो कंपस होता है, वो कर रहा था, बट वो एक्यूरेट नहीं था, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट नहीं था. I made an allowance for this and another estimate of the influence of the westerly current which flows through this part of the Indian Ocean. ठीक है, तो ही मेड एन अलाउंस, आई मेड एन रिजल्ट ऑफ दिस एंड दिस अनदर एस्टिमेट ऑफ इन्फ्लुएंस. अब उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, एस्टिमेट करना शुरू कर दिया कि वेस्टली करंट्स होंगे इंडियन ओशन में. अबाउट 2 PM, अब कितने हो गए, 2 PM, राइट. शाम के 2 बज गए हैं, सॉरी दिन के 2 बज गए हैं. आई वेंट ऑन डेक, ठीक है, तो हु वेंट ऑन डेक, द राइटर, एंड आस्क्ड लैरी टू स्टर अ कोर्स ऑफ 185 डिग्रीज. तो उसने, लैरी था, वो स्टरिंग व्हील पे था, उसने बोला 185 डिग्री पे टर्न हो जाए. इफ वी आर लकी, आई टोल्ड हिम विद अ कन्वेक्शन, ठीक है, आई डिड नॉट फील ही वुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड अबाउट 5 PM. तो उसने बोला अगर हमें सही हुआ तो शाम 5 बजे तक हमें क्या मिल जाएगा, आइलैंड मिल जाएगा. देन विद अ हैवी हार्ट, ठीक है, आई वेंट बिलो, बहुत दुख के साथ, ही वेंट बिलो, क्लाइम्ड ऑन माई बंक, ठीक है, ही क्लाइम्ड ऑन हिज बंक बेड एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, ही स्लेप्ट. When I woke up
इट वॉज 6 PM, और जैसे वो उठे कितने बज रहे थे, शाम के 6 बज रहे थे. एंड ग्रोइंग डार्क, अगेन इट वॉज ग्रोइंग डार्क क्योंकि अब रात होने वाली थी. आई न्यू वी मस्ट हैव मिस द आइलैंड एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट. तो उसने सोचा कि अब हम क्या कर रहे हैं, वी हैव मिस द आइलैंड, वी हैड लेफ्ट, वी कुडंट होप टू बीट बैक इनटू द वेस्टर्ली विंड्स. बोलते अब हमारी इतनी हिम्मत नहीं थी कि हम कहाँ वापस कर, हम किसको फाइट कर सकते, बीट कर सके, किस चीज़ को, वेस्टर्ली विंड को. एट द मोमेंट अ टॉसल्ड हेयर, डिसअरेंज्ड हेयर, ठीक है, appeared by my bunk. अब एक टॉसल्ड हेड था, वो कहाँ पर आया, बंक पे आया. Can I hug you? Can I have a hug? Jonathan asked. Sue was right behind it. तो Jonathan का सर था वो पूरा क्या था, डिसअरेंज्ड था, राइट. तो उसने बोला, फादर कैन आई हैव अ हग, क्या तुम मुझे हग कर सकते हो. और सू उसके पीछे थी. वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, आई आस्क्ड. बोले मुझे क्यों हग मिल रही है. बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द वर्ल्ड एंड द बेस्ट कैप्टन, माई सन रिप्लाई. तो वो बोलता है कि यू आर द बेस्ट डैडी, आप सबसे अच्छे पापा हो, एंड द बेस्ट कैप्टन, और आप सबसे अच्छे कैप्टन हो. नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड. उसने बोला आई एम अफ्रेड कि आज मैं क्या हूँ, अच्छा कैप्टन नहीं हूँ. Why? You must be, said Sue in the matter-of-fact voice. You found the island. तो बोलते हैं नहीं आप बहुत अच्छे क्या हो, sailor हो, and you are the best captain because you have found it. You have found the island. What? I shouted. उसने चिल्लाया एकदम से, क्या हुआ? I shouted. It's out there in front of us. They chorused. Chorused का क्या मतलब होता है, चलो एक साथ जोर से चिल्लाना, ठीक है. उसे बोला कि वो सब ने बोला कि वो जो आइलैंड वो हमारे सामने है, एज बिग एज अ बैटल शिप, ठीक है. तो बोलते वो एक साथ चिल्लाने लगे कि वो क्या है, एक बहुत बड़ी बैटल शिप की तरह है. आई रश्ड ऑन द डेक, ठीक है, और डेक पे गए, सॉरी, एंड गेज्ड विद रिलीफ, फिर घूरा और बहुत ज़्यादा रिलीफ के साथ, ठीक है. एट द स्टार्ट आउटलाइन ऑफ आइल एम्स्टरडैम, ठीक है, अब उनको मिल गया था क्या, एक आइलैंड. इट वॉज ओनली अ ब्लीक ऑफ पीस ऑफ वॉल्केनो रॉक विद लिटिल वेजिटेशन, द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. वो बोल रहे कि जो वो आइलैंड था ना, वो वॉल्केनो की तरह था जिसमें बहुत कम वेजिटेशन होता है. वैसे तो वो ब्यूटीफुल नहीं था, बट अभी उनके लिए ब्यूटीफुल क्यों है, क्योंकि उनकी जान बच चुकी है, इसीलिए इट इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. We anchored offshore for the night, and the next morning all 28 inhabitants of the island cheered as they helped us ashore. अब क्या हुआ, उन्होंने एंकर कर दिया, वहाँ पर रुक गए उस रात को, और फिर जैसी सुबह हुई तो 28 हैबिटेंट्स थे, याद है वो फ्रेंच की साइंटिफिक लेबोरेटरी सेट होती थी वहाँ पर, ठीक है, रिसर्च होता था साइंटिफिकली. With land under my feet again, my thoughts were full of Larry and Herbie, cheerful and optimistic under the direct stress, and of Mary who stayed at the wheel for all those crucial hours. तो वो सारा का सारा टाइम क्या कर रहे थे, क्योंकि लैरी और हर्बी थे वो जो कि क्या थे, क्रूमैन थे, उन पूरे टाइम पानी पंप कर रहे थे. और जो उनकी वाइफ थी मैरी, वो पूरे टाइम कहाँ पर थी, व्हील्स चला रही थी. मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट of a 7-year-old girl who did not want us to worry about a head injury. ठीक है, वो बोलती है ना कि मुझे आप लोगों को परेशान नहीं करना था, इसलिए मैंने आप लोगों को अपनी इंजरी के बारे में बताया नहीं. Which subsequently took 6 minor operations. अब उसको ठीक होने पर कितने minor operations हुए, 6. To remove a recurring blood clot between skin and the skull. तो एक blood clots थे जो उसके सर पे थे, और 6 minor ऑपरेशन हुए. एंड ऑफ अ 6-year-old boy who was not afraid to die. और फिर वो बोलते हैं ना, बॉय बोलते हैं कि we are not afraid to die if we are all together. Okay children, now we will carry on with little bit of summary, and I'll show you the picture of the family, the ship and everything. Now see children, okay, let's move on.
Now this is Captain James Cook. Okay, he was born on 7 November 1728 and he died on 14 February 1779. Was a British explorer, navigator and cartographer who ultimately rose to the rank of captain in the Royal Navy. ठीक है. Now see the route of Captain James Cook voyage, क्योंकि वो उनका नाम लेता है. The first voyage is shown in red color, second voyage in green and the third voyage in blue color. The route of Cook's crew following his death is shown as a dashed blue line, right? Next, we have the character. There's a narrator, his wife, Mary, Jonathan, Susan, American Larry Vigil, and Swiss Herbs Segriel. Okay, and both of them were crewmen. Okay, Segriel. Now next, see, this is the picture of the writer, the wife, and two children. Now, introduction. Narrator, a good man of great courage, committed and conviction, proved to be the best captain as well as the best father with unpending gift and determination. Mary, a wife who always stood by her husband's side in all times of difficulty and consider her dreams as her own. और उसके dreams को, किसके dreams को, narrator के dreams को अपने dreams की तरह बनाती थी. Suzanne, she was a brave girl. Her bravery toughened her father's resolve to fight the sea storm tooth and nail, right? Jonathan, shows of bravery and his fearlessness in the face of a death highlights his characters. He regenerated the hope of his father by remarking, "We are not afraid to die if we can all be together." Now, in the next video on July 1976, they sailed for journey to world voyage. They tried to duplicate the round the world voyage made 20 years earlier by James Cook in their professional ship the Wave Walker. तो उनकी ship का नाम क्या था? Wave Walker. Next, see, the pleasantly sailed down from west coast of Africa to Cape Town. They sailed to South Indian Ocean. Okay. They faced first sign of implementing disaster. They first encountered strong winds on second day of Cape Town and was continued for a few weeks. Wave raised to 15 long, as high as the mast. See, now what is a mast? I'll show you in this picture. Wait, this is the mast. So these waves were as high as these mast. Got it? Next. Now, disaster and its aftermath. By 6 p.m., tremendous explosion shocked the deck and powerful flow of water broke over the ship. Wave Walker was getting sunk and captain was badly injured. Captain kept courage and found the wheel and leaned up the stern, okay, for next wave. Okay. Next, see, this is the ship. Now crewmen shows off unparalleled strength. They started pumping out water and settled to make necessary repairs to save the boat from sinking. Sorry, this is not sinking, this is sinking. Okay, there should no be H. They managed to stretch canvas. Canvas is the cloth. ठीक है, इट इज़ अ वाटर प्रूफ क्लॉथ जिससे पानी अंदर नहीं आ सकता है, एंड सिक्योर वाटर प्रूफ हैच कवर अक्रॉस द गैपिंग होल्स, राइट. नेक्स्ट, सी, दिस इज द आर वे वॉकर, राइट. अदर प्रॉब्लम्स अरोज, और क्या क्या प्रॉब्लम्स जो थी वो अराइज हुई थी? इलेक्ट्रिक पंप शॉर्ट सर्किट, वाटर लेवल रोज थ्रेटिंगली, डॉटर सुजान वाज बैडली इंजर्ड, है ना, जो उसका बम्प हो गया था और उसकी दोनों आइज ब्लैक हो गई थी, प्लस उसके आर्म में कट्स होना शुरू हो गए थे, राइट. Only hope for the captain to reach the island, which was only possible if the wind will slow down, to reach Amsterdam, which is few hundred kilometers of the east.
Showing off the exemplary courage, Jonathan said, "We are not afraid to die if we all can be together." Right? This were the encouraging words जो कि एक father को बहुत ज़्यादा hit करी गई कि no, if my son can do this for me, if he can say all these encouraging words, I shall live, I shall fight with the waves. Now Jonathan courage and Sue bravery instead of her bumped head inspired the captain to fight the sea and protect his family. Crucial days from Jan 4 to 5. After 36 hours of continuous pumping, there was only few water left. ठीक है? They hoisted the storm jib and headed in the direction of two islands. Black clouds built in 4 p.m. and sea was getting its waves higher. This is wave walker. Now on Jan 6, they saw wave walker ride storm and wind east. They expected to see the island at 5 p.m. but when the writer woke up, when the captain woke up, it was 6 p.m. and they thought they had missed, and he thought that they had missed the island. Okay? But they were wrong and they touched the shore at Isle of Amsterdam. Okay? See, this is where I'll show you. Wait, this is the wave walker, though the picture is not so clear, and this is the Isle of Amsterdam, and they are moving this side. See, this is the island. See, it said that the vegetation is very less. What did it say? That the vegetation is very less. है ना? बोला था. Now, if the vegetation is less, still the writer liked it. Still the writer liked this island because this was the only hope. ठीक है कि वो क्या बच जाएंगे, right? It was the hope for them. Isle of Amsterdam, very less vegetation, but still liked by the writer. See, a few houses, and here, children, the French. Yeah, the French, it is French scientific laboratories or testing होती थी यहाँ पर, right, in this area, right? So see, very less houses are there, or what you can say laboratories are there, right? Significance of the title. Significance, importance. The title is taken from Jonathan's remark, है ना, जहाँ पर वो बोलता है, we are not afraid to die, daddy, if we are all together, right? कब बोलता है? जब कंफर्ट करने के लिए जो राइटर होते हैं वो जाते हैं, तो डैडी आर वी गोइंग टू डाई, वो पूछता है ना, तो फिर डैडी आई ट्राई टू अश्योर हिम दैट वी कुड मेक इट. उसने बोला कि नहीं नहीं, हम बच जाएंगे कैसे भी करके. बट डैडी ही वेंट ऑन, पर वो फिर से बोलता है, वी आरंट अफ्रेड टू डाइंग इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर, यू, मम्मी, सू एंड आई. तो ये क्या होती है? ब्रिंग्स अप दैट ब्रेवरी. उनको क्या एक तरह की ब्रेवरी मिलती है, उनको हिम्मत मिलती है. और प्लस दूसरी चीज़ क्या थी, जो सू ने कार्ड बनाया था, एक कैरिकेचर पिक्चर ऑफ अ पर्सन ऑफ मैरी, और जो उनके हस्बैंड थे उनके लिए बनाया था, और उसने लिखा था, हियर आर सम फनी पीपल. याद आया? एंड डिड दे मेक यू लाफ? उसने पूछा, डिड दे मेक यू लाफ? आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. वो खुद राइटर खुद इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा हंसे थे. इनसाइड वॉज अ मैसेज. ओह, तो इनसाइड वॉज अ मैसेज. ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ. सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू. तो वो कार्ड किस लिए बनाया था? ताकि वो क्या बोल सके? थैंक यू बोल सके. And so this card is to say thank you and let's hope for the best. Somehow we had to make it. और ये जो words है कि somehow we had to make it, it brought bravery. So it brings, see, it says it brings bravery, grit and courage to the captain's family and love each member as for their others. क्यों? एक तो ये वर्ड्स जो उसके बेटे ने बोले गए थे, और दूसरा जो कार्ड था उसकी बेटी ने दिया था, और उसने बोला था somewhat we have to make it through. Got it? Next,
theme: human nature of knowing and taking on challenges, how you take on the challenges. ह्यूमन इंस्टिंक्ट ऑफ सर्वाइवल, जो हमारी इंस्टिंक्ट बोलती कि नहीं हम बच जाएंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी, जैसे कि वो गर्ल ने बोला था समहाउ वी हैव टू मेक इट। तो क्या बोला था गर्ल ने कि समहाउ, ठीक है, वी हैव टू मेक इट, कैसे भी करके वी हैड टू मेक इट, है ना, ये बोला गया था। तो व्हाट इज इट? इट इज द इंस्टिंक्ट ऑफ दैट गर्ल, ठीक है। और अगर हम बोलें कि व्हाट इज ह्यूमन नेचर ऑफ नोइंग एंड टेकिंग चैलेंजेस, ना ह्यूमन ब्रेवरी, यहाँ पर ब्रेवरी कहाँ थी? जहाँ पर गर्ल का बम्प लग गए थे, दोनों आंखें सूज गए थे, इतने सूज गए थे कि द आईज वर ओनली ओपनड अ बिट। ग्रेट करेज, यूनिटी, यूनिटी, जहाँ पर वो बेटा बोलता है वी आरंट अफ्रेड टू डाई डैडी व्हेन वी आर ऑल टुगेदर, फिर वो बोलता है यू मी मम्मी एंड सू, है ना, दैट इज यूनिटी। And determination, which in the story is exhibited even by the small children, right? And where the wife holds hand of her husband. Now theme of the story: element of luck, ठीक है, then faith in one's optimism, ठीक है, positivity, not despairing, hope even in difficult circumstances, and sharp presence of mind, है ना, कि कैसे sharp presence of mind, क्या जब वो चेक कर रहा था और रीचेक कर रहा था क्या अपनी कैलकुलेशंस को, और वो अपने माइंड में डाल रहा था कि क्या क्या चीज़ें गलत हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें सही हो सकती हैं। गॉट इट? इंस्ट्रूमेंट क्वालिटीज ऑफ अ कैप्टन विच proved journey successful even after strong hurdles। उसने बोला इंस्ट्रूमेंटल क्वालिटीज, इंस्ट्रूमेंटल, जब उनका जो 16 था वो क्या हो चुका था, वो कहीं खो गया था क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा भर गया था। तो उसके बावजूद भी उनके पास क्या था, जो कंपस था, जो मैग्नेटिक कंपस था, जो 100% श्योर होता है, वो भी पानी में कहीं खो गया था। तो उन्होंने क्या करा, एक बिना मैग्नेट वेरिएशन का वो लेके आए, कंपस लेके आए, राइट, और उससे उनकी क्वालिटीज़ के बारे में पता चली। गॉट इट? एंड विच प्रूव जर्नी सक्सेसफुल इवन आफ्टर स्ट्रॉन्ग हर्डल्स, स्ट्रॉन्ग मुश्किलें। ओके, नाउ चिल्ड्रन, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस।